यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तुमको ये समझ में आ गया ना तो तुम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कौन सा भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो फ्रॉम अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, नाउ व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमारे लिए कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. What investors expect from us, right? हमारे हाथ में थोड़ी होता है. We cannot decide ना कि कोई फाइनेंस प्रोवाइडर हमको कितने में फाइनेंस प्रोवाइड करे. It is not our decision. It is a decision of the finance provider. तो जो भी हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है वो देखेगा कि हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने में कितना रिस्क इन्वॉल्व है. अगर हमें फाइनेंस प्रोवाइड करने में उसको बहुत ज्यादा रिस्क लगता है तो नेचुरली वो ज्यादा कॉम्पेंसेशन मांगेगा. वो बोलेगा गिव मी हायर रिटर्न. तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द फाइनेंस प्रोवाइडर्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस डिपेंडिंग ऑन आवर रिस्क लेवल. अभी ओके. नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दीस टू पॉइंट्स ओवर हियर. Total return which is demanded by an investor is dependent on these two specific factors. What is the first factor? The reward investors demand for the risk that they have taken in advancing the firm, finance to the firm or funds to the firm. The first finance provider क्या देखेगा कि मैं कितना रिस्क उठा रहा हूँ XYZ कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करके. अभी ओके. सेकेंड थिंग वो देखेगा कि प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रिटर्न क्या है. प्रिवेलिंग रिस्क फ्री रिटर्न क्या है. रिस्क फ्री रिटर्न किस पे मिलेगा. विच इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री. इसमें मतलब कुछ ही रिस्क नहीं है. तो आंख बंद करके तुम इन्वेस्ट कर सकते हो और तुम्हें कुछ टेंशन नहीं है. 100% रिस्क फ्री. Next, इसके पास government, absolutely all government products or government investment products are risk free. वहाँ पे आपको 100% गारंटी है. रिटर्न तो कम होता है, नो डाउट अबाउट इट, बट एटलीस्ट वी आर 100% श्योर कि अपना कैपिटल किधर जाने वाला नहीं. राइट. So these are the two things an investor will consider. Why these two things we are going to continue. Yeah. This session will build on all of this by looking at how a firm can identify the overall cost of finance using the technique. Identify sources of finance, use equity finance, calculate cost of equity, debt finance, identify types of debt for each type, calculate the cost. Using all the costs together, find a weighted average cost. This is the key approach for finding a company's WACC weighted average cost of capital. एग्जामिनेशन क्वेश्चन. तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है इस चैप्टर का. वैक कैलकुलेशन. एंड ऑफ द चैप्टर हमें वैक कैलकुलेशन करना है और वैक कैलकुलेशन के लिए हमें हर एक सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट चाहिए. हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए, हमें कॉस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेट चाहिए. उन सबको मिला के हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे जो बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वैक. Let's continue. Calculating returns. The cost of each source of finance the company can be equated with the return that the providers of finance investors are demanding on their investment. This return can be expressed as a percentage, effectively an interest rate that can be used as the overall measure of cost. That is, the cost of money is the percentage return the firm needs to pay its investors. To calculate the return being demanded, we will assume that in perfect market value of investment is equal to the present value of the expected future returns discounted at the investor's required return. This is the same as saying the investor's required rate of return is equal to the IRR achieved by investing the current price and receiving the future expected returns. This is the base premise that will be assumed for all of the subsequent workings in our cost of capital. Yes. अभी ये लॉजिक अगर तुम्हारे दिमाग में ढंग से बैठ जाता है ना, as I told you, तो फिर तुम्हारा पूरा चैप्टर ही सॉल्व. ओके. अभी एक चीज तो ये है कि चैप्टर तुम्हें फॉर्मूलाज देने वाला है. ठीक है. तुम फॉर्मूलाज की तो पहले लिस्ट बना लो कि इतने सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उनका कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला. राइट. बट अभी एफएम पेपर एवरीबॉडी नोस, कोई तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन द प्लेटर कैलकुलेशन देने वाला है नहीं. थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा होने वाला है. और जहां टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आया नहीं
तो ये लॉजिक यूज करके तुम किसी भी सोर्स ऑफ फाइनेंस का कॉस्ट निकाल सकते। व्हाट इज द लॉजिक? व्हाट इज द लॉजिक? अंडरस्टैंड द फर्स्ट इक्वेशन। मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट, market value of any investment. This is from an investor point of view. If you want, you can write over here. This we are calculating from the investor point of view. From an investor point of view, market value of an investment is nothing but the PV of the expected future returns. PV of the expected future returns discounted at investors' required return. Discounted at investors' required return. Now, let me show this to you with the help of an example. Place yourself in the shoes of an investor. Sheet 79. Now, think of yourself as an investor. Okay. Now somebody comes to you with an investment opportunity. कोई तुम्हारे सामने आ गया, बोला एक investment opportunity है, you 5 लाख रुपया डालो. Okay, there is an investment opportunity, 5 lakh rupees. Now, what is the first question you will ask? Expected return क्या है? First question तुम पूछोगे कि ये investment मुझे return कितना दे, ठीक है? अभी वो बोलेगा कि हाँ तुम्हारा रिटर्न ये है कि अगले whatever 6 साल में तुमको हर साल हम 1,20,000 देंगे, बराबर? तो तुम बोलते हो अच्छा ठीक। कि तुम थोड़े एडुकेटेड हो, तुम अनएडुकेटेड होते थे तुम क्या करते थे? तुम बोलते थे चलो इसका सम कितना है? इसका सम है 7,20,000। मैं तो बहुत पैसा बना रहा हूँ, 5 लाख डाल रहा हूँ और मुझे 7,20,000, राइट? पर तुम एडुकेटेड हो, तुमने फाइनेंस पढ़ा हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? ये 1,20,000 का मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी निकालना चाहिए, क्योंकि आज का 1,20,000 इज नॉट इक्वल टू द 1,20,000 आई विल रिसीव इन द 6th ईयर। तो सेकेंड थिंग तुम क्या करोगे? तुम इसको डिस्काउंट करोगे, एक डिस्काउंट फैक्टर लगा का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना, तुम बोलोगे अच्छा वो 1,20,000 का आज का वैल्यू कितना है, बिकॉज पैसा तो मेरा आज जा रहा है, तो तुम उसको एक डिस्काउंट फैक्टर से डिस्काउंट। ऑलराइट, ये डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? ये डिस्काउंट फैक्टर क्या होगा? टिपिकली अगर ये पैसा तुम्हारे सेविंग्स से जा रहा है तो तुम क्या करोगे? मार्केट में सब जगह देखोगे यार कौन कितना रिटर्न दे रहा है, एंड यू विल पुट दैट एज अ बेंचमार्क, राइट? फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इज ऑलवेज बोरोड। पैसा बोरो करना पड़ता है, तो हम भी अज्यूम करेंगे कि इन्वेस्टर के पास खुद का पैसा नहीं है, वो हमेशा बोरो करके इन्वेस्ट करता है। Now, if the investor is, let's say, borrowing at 8%, वो बोलेगा मुझे मिनिमम 8% तो चाहिए इस इन्वेस्टमेंट से, उसका डिस्काउंट फैक्टर क्या हो जाएगा? 8। अभी ओके, 8% से मैं इसको डिस्काउंट अगर करूं, आई होप एवरीबॉडी नोस डिस्काउंटिंग, तो मैं इस रिटर्न का पहले तो प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगी। I will calculate the present value and then I will say okay, what is the total of all the present value of the returns I'm getting, and the present value of the returns I'm getting is 550. Now you will say okay, investment is worth. Now अगर तुम्हें अभी कोई 5 लाख डालने बोलेगा तो तुम ये पीवी निकालोगे, बोलेगा हाँ इसका पीवी 554 आ रहा है, आई कैन कंसिडर दिस। अभी ओके, व्हाट अ फाइनेंस मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड इज कि कंपनी को कोई भी फाइनेंस देने के पहले ये कैलकुलेशन करे। कंपनी को कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के पहले या फाइनेंस देने के पहले ये कैलकुलेशन करेगा, and the bare minimum an investor will require is कि ये पीवी कितना हो जाना चाहिए? 5 लाख, bare minimum, है ना? bare minimum एटलीस्ट मेरा रिटर्न शुड बी इक्वल टू माय आउटफ्लो,
Now come back to this equation. The market value of any investment. मतलब today somebody is asking you to put 5 lakh in any investment. What will you say? That this should be equal to present value of the expected future returns discounted at the investor's required return. Discounted at investors required return, which in our case was 8%. समझ रहे हो क्या? अभी आइडियली ये 8% नहीं होगा, ये IRR. IRR मेरा कट ऑफ हो जाएगा. IRR पे एटलीस्ट आउटफ्लो इज इक्वल टू इनफ्लो, उतना मिनिमम तो मुझे चाहिए. Everybody's got this equation.